Done? Okay. Chalo. Welcome to Unique Academy. We are here for the combined Group B and C examination batch. We are having our orientation lectures. Already we have started from Monday, right? We completed our science lecture yesterday. The day before yesterday, you are completed with the your orientation part. Today we are having our maths and reasoning orientation lecture. We are going to understand total syllabus of the maths and reasoning subject, importance of the subject, what is the importance for maths and reasoning in the competitive examinations, not only combined examinations but also in the whole examinations, all the examinations, those who are taken all over India. ठीक है, चलो start करते हैं. Myself Prashant Rupnar, completed my engineering. Right now we are starting with the our subject orientation. First of all, importance of mathematics in the combined examination. What is the importance? See, lots of students are from the background of arts and commerce. Okay? Those students are facing the problems with maths and reasoning because of the conceptual understanding. They don't have that much of conceptual understanding with maths and reasoning, because the rattafication is the favorite part for the competitive examination student. All the aspirants are like to rattafication, ratta maro, चलो सब्जेक्ट पास कर लो. इसमें क्या है, first of all, mathematics and reasoning are among the most important subjects. See, I am telling about maths and reasoning. We are pronouncing it in as a one subject, but actual it is segregated in two subjects. One is the mathematics, in which static part is there, and in reasoning, quantitative aptitude and logical reasoning is also there, right? Just give me a minute. Okay. See, maths and reasoning, for pronunciation we are it pronounced it as a one subject, maths and reasoning, but actual understanding, after looking our papers, we can get it in two subjects. Maths, one is mathematics, which has a calculative part, most of the calculative parts in averages, percentage, fractions is there, time, work, speed, percentages, those topics are there in the mathematics. Okay? Afterwards we are seeing reasoning. It's another subject in which your logical thinking, commission is going to check your logical thinking, how you can solve the problems in minute. After seeing that, the most important subjects in the MPSC Group B and C examination. This is the most important things. Again and again I am telling you, this is the most important subject, maths and reasoning, which is having 20 marks of weightage in the prelim examination. How much weightage it is have? 20 marks of weightage in the examination of preliminary examination, combined group B and C. This is the only subject which is having a increasing weightage. In pre it has a 20 marks weightage, in mains it has a 22 questions, means 44 marks of weightage only with the maths and reasoning. ठीक है, देखो, you are going to attempt the mains examination after your prelim examination, right? The basic thing and deciding factor is maths and reasoning and science. These two subjects, maths and reasoning and science, these two subjects are deciding factor for your whole merit, or cutoff level is decided by these two subjects, because mathematics and reasoning having 20 questions, right? Science is having 15 questions in preliminary examination, means you are having 35 questions only in those two subjects, maths and reasoning and general science. We are here to discuss about importance of 20 questions regarding with maths and reasoning, right? Yes. Then what is the importance of maths and reasoning? First, high scoring subject. See, first एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है, इफ यू अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट ऑफ द chapter, then you can solve any type of question which is you can face in the examination.
Okay, the most thing you have to understand, or most important thing is you have to understand the concept. एक फॉर्मूला है, उस पे आप 10 12 100 जितने चाहे मर्जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, इट्स अप टू यू. ठीक है, योर स्कोरिंग and your success in the maths and reasoning is depend on the your practice, how much practice you can perform after your lectures. This is the most important key, this is the master key. Practice and concept understanding of the maths and reasoning is the master key for the success of the prelim and mains examination. Next, mathematics and reasoning are objective in, yes, every subject is objective because our exam nature is objective nature, right? We are having an objective pattern for our examination. Most of competitive exams are having objective pattern, right? Next, consistent practice. See, what we have, consistent practice. एक बार में समझ में आया मुझे, चलो हम we are getting the concept, we understood the concept, and we just forget it for the rest of 2 months 3 months, and again after 3 months we can realize that we are not having enough practice for the subjects. We don't have enough practice for the subjects, we can understand after 2 or 3 months later. Then we can again start to learn the subject, again start to learn the concept, again start to learn the formula for this such practice, such a chapter. This is more difficult for you, this is more difficult for you because if you don't have a consistent practice. See, एक बार अगर आप बार बार करते हो कोई भी, मतलब आप जितना भी समझते हो उसमें देखो, कोणती पण गोष्ट आपल्याला जर करायची असेल तर ती जेवढी आपण रिपीटेडली प्रॅक्टिस करू तेवढा आपल्याला जास्त फायदा. If you are having repeated practice for the problems of maths and reasoning, you can get the success in maths and reasoning because your understanding level of the subject and concept is getting sharper and sharper, not better only. It should be sharper because afterwards after this point I am explaining you why I am using sharper and sharper. After this point I am explaining you why sharper and sharper. ठीक है, candidates can score 80 to 90% or even higher. ठीक है, consider we are having 20 questions, right? To crack the preliminary examination, you have to score minimum, what I'm saying, you have to score minimum 15 questions, at least 15 questions to write up to the mark. Then only you can get the success in your preliminary examination. I'm talking about only 20 questions of maths and reasoning. These 15 questions are for maths and reasoning only. For mains, weightage is increased. Okay, in prelim you are having 20 questions, in mains you are having 22 questions. This is the only subject which has a increased pattern for the questions. Okay, then next point is these subjects offer an excellent opportunity to gain maximum marks. Again, see, excellent opportunity to gain maximum marks. Why you can get the maximum marks? Because the number of questions are there. Number of questions are there. Okay, another one. They are easy and numerical formulas. Once the concept is clear, you can easily tackle the question any kind. Correct. If you are cleared with your conceptual part, then you can solve any type of questions in all the examinations. Whichever exam you are going to participate, then you can solve it in with your conceptual part. So there is less understanding, more practice is the success. Once you are clear with your conceptual part, then just you have to do is practice and practice and practice. Just do more practices. Then you can get the maximum marks in this subject. And this is the fact which is lack
for the all the students which are facing with this subject. They don't have much more practice, they cannot perform their practice sessions, that's why they are lagging behind with this subject. See, how many subjects we are having in the prelim sessions? In prelim section, how many subjects we are having? No. Have you go through the syllabus for the prelim and mains? Have you read it or not? Yes. In prelims, we are having 7 subjects, right? First off, consider your GS subjects: history, geography, then your economics, polity. These are common subjects which everybody is studying for that one. Just go for the ratta, because it's understanding part. रट्टा मारो, चलो क्या करना है, पढ़ते रहो, रट्टा मारो, चलो हमें समझ में आ गया, बस इतना. All over Maharashtra, all the aspirants are getting average marks in those 4 subjects. And what I'm saying, in Maharashtra, 80 to 85% aspirants are getting average marks in that 4 subjects. So why cutoff is increased? See, yesterday cutoff is declared, right? What it is? 53.5. Why it is higher than the last examination? Only because of students are getting marks in maths and reasoning and science. Okay. So all over Maharashtra, 80 to 85 aspirants are getting marks in the GS subjects, these 4 subjects. And what are the deciding factors in your prelim score? Maths and reasoning, general science and current affairs. Because 50% section belong with these 3 subjects: maths and reasoning, general science and current affairs. This is the key. Students are studying for the rest of 50%. Correct? Are you getting my point, everyone? Yes. See, then second point, crucial for merit ranking, as we discussed, right? Why it's a crucial for merit ranking? Because many candidates often score similar marks in general studies. Yes, we discussed it for the rest of 4 subjects. In general studies, how many questions you are having? History 10 questions, geography 10 questions, economics 15 questions, and after the rest polity for 15 questions. You are having a fixed structure for this one. Okay, then this structure is very easy for the all of the students because they are from Marathi background, lots of thinking. Arts commerce students are just perfect in the rectification, because they are understanding logical thinking. What is logical thinking? You have to use your brain, how you can solve, how you can get more faster in the solutions. Okay, and this is the difficult part for the student to solve the maths and reasoning. Why? Because base, what is the base for the maths and reasoning? Critical thinking is afterwards, but what is the basic structure is your first upon. Basic structure is your to learn the tables. 2 to 30. How much you are having? 12 up to 50. Okay. Then in the examination, suppose I am giving you an example. This is the basic. फ्रॉम LKG UKG, बालवाडीपासून आपण तेच बघतोय. पाडेपाठ करा, वर्गपाठ करा, घनपाठ करा, बरोबर. आपण केलेले असतात कधीपर्यंत? 10वी 12वी. त्याच्यानंतर आपण त्याकडे लक्ष दिले का? नाही. दॅट्स द मेन फॅक्ट. You have to learn. Suppose in the examination you are having question 24 multiplied by 26. You are having question 24 by 24 into 26. Then how you can solve it? Just 6 4s are 24, 4 2, 6 2s are 12, then 2 14. Yes, this is how we can simplify this one, right? If you have by heart your table up to 30, then it's more easier for you to solve these questions, right? This is the key factor.
We ignored these things. Table, square, square roots, cube roots. This is the basic structure for your math section. This is the key structure for your math section. See, in maths, what topics you are having? We are having that slide also. Okay. This is the for mathematics. What topics you are having? Percentage, profit loss, simple interest, compound interest, time and work, right? Speed, time, distance. Here LCM, HCF, number system, equation with two variables, averages, ratio proportions. After watching this all the topics, how we can understand? You have to learn, first of all, you have to learn the tables to solve these type of numbers and calculus part. Mathematics is related with your calculus parts and reasoning is related with your logical thinking part. Are you getting my point? Yes. See, mathematics and reasoning frequently become the deciding factors. Yes, we discussed it. These are the deciding factors in the your prelim examination and mains also. Why? In mains you are having 22 questions on maths and reasoning. In prelim you are having 20 questions. Okay, just fit it in your mind only. 20 questions for prelim, 22 questions for mains. Avoiding maths and reasoning, you cannot get success in any examination. Any, लिख के लो, कोई भी एग्जाम, मैथ्स एंड रीजनिंग के अलावा आप कोई भी एग्जाम पास कर ही नहीं सकते. So this is the deciding factor for all the examinations, right? A higher score in these sections can help candidates stay above the cutoff. This is the important thing. What is? Stay above the cutoff marks. See, after giving examination, have you attempted the last paper or not yet? Not yet. All are freshers. Okay. तुम्ही बघा, जे जुने मुलं आहेत पेपर दिलेले त्यांना फक्त विचारायचं, पेपर झाल्यावर मेन्स अभ्यास चालू केला का रे, एवढंच विचारायचं फक्त जुन्या मुलांना. ते काय म्हणतील, नाही अजून कट ऑफची वाट बघतोय. तुझे मार्क किती आहेत? नाही बाउंड्रीवरती. दिस इज द फॅक्ट फॉर द aspirants to start the study for the mains examinations because they dependent on cut off marks. Why? They are not scoring maths and science. They are having doubt in their maths and reasoning section. Understood? That's why this is the part, maths and reasoning. This decides and gives you belief in yourself that you are having a maximum marks than cutoff level, and you can start preparation for your main studies. This is the main part. This is the relief. This gives you relief, and you can start with fresh mind. You don't have any depression. माझं होईल का नाही, मग कसं करू, मग कशापासून सुरुवात करू, मग आता मी काय करायला पाहिजे. हे जे तुमचं डिस्ट्रॅक्टिव्ह माइंड आहे, यू आर हॅव्हिंग सच अ डिस्ट्रॅक्टिव्ह माइंड इन फॉर द लेवल ऑफ boundary level of the cutoff marks. Why? You know you are just in between +2 or +3 marks in between cutoff marks, right? That's why you are in distraction mind. But if you are having marks more than, suppose +5 +10 more marks than cutoff level, then what you are having a plus points. Yes, then you can just focus on your main studies. You are having a clear focus for which exam you have to prepare. This is the fact. That's why this is the deciding factor, maths and reasoning, in every examination, that either you can go for the mains or not. Yes, then
useful for other competitive examinations. So maths and reasoning is useful for only combined examinations. Is it possible? No. Maths and reasoning is the useful for all the examinations those are conducted by all over India or conducted by the central agencies for the various posts, right? For MBA, there are also maths and reasoning. MBA entrance, they are having a maths and reasoning in the syllabus, right? SSC GD, Group D post, Police Constable, SSC GD, Central Police Constable, they are having maths and reasoning. Agnivir Bharti, after 10th, they are having maths and reasoning. MPSC Rajya Seva, they are having separate paper, CSAT, in which 25 questions related with maths and reasoning. Getting my point? Then, banking examinations, you are having maths and reasoning. Yes, in banking examinations, you are also having a maths and reasoning. This is अपने यहाँ पे चलिए जीएस तो है बहुत सारा. अगर आप देखोगे एसएससी जी इन सरल सेवा, what you are having a 25%, 25 marks for the this maths and reasoning part, right? So just just consider the importance of the maths and reasoning in all over all the examinations those who are taken from the central agencies to conduct for the to select the candidates for the various posts. Okay, are you getting my point? Next, see, this is the just example. These exams name are just the example for you to understand how many exams conducted and how many exams are having maths and reasoning in their examination part, right? Such as Saral Seva Bharti, SSC examination, in that SSC CGL is there, CHSL is there, SSC GD is there. Afterwards, banking examinations, then Railway Recruitment Board, RRB, all the examinations of RRB, right? Railway recruitment examinations, insurance sector examinations, in banking examination, SO, PO posts are there. For that exam also, maths and reasoning is important. Yes, that's why we have to learn maths and reasoning for each and every exam. Once you can understand the concept of the subject or topic, then you can solve any type of examination. See, exam pattern in 2025, 25 questions are very simple. Those were very simple related to police bharti Saral Seva level. For this year, I have a question list with us today for. See, we are having a questions for 2026 एग्जामिनेशंस. जितने भी 2026 में कंबाइन में अभी एग्जाम हुई है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस है कंबाइन ग्रुप बी के, वो हमने आज आपको दिखाने के लिए लाए. ठीक है, तो अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल. आज ही हमको पूरा सॉल्व करना है ऐसी बात नहीं है. ठीक है, देन the 80 to 90% scoring potential. Subject is students have to score 80 to 90% score in maths and reasoning. How? What is the reality? The reality is maths and reasoning is the scoring engine for all the examinations. Scoring engine for all the examinations. Okay, hey, we can cancel it. Okay, we can write it here, all the examinations. Good, understood? Maths and arithmetic and logical reasoning are the ultimate scoring engines in all the examinations. We can rub it. MPSC combine is just forget it. If we learn the maths and reasoning, we have the potential to crack all the examinations in all over India. That's why we can write it here, all the examination. Afterwards, the strategy. What should be our strategy for the 80 to 90% success in maths and reasoning? Arbitrary studying to precise planning. What is that? Shift from arbitrary studying to precise planning. जो मन में आया वो सब्जेक्ट कर लिया,
जो मन में आया वो टॉपिक कर ले, ऐसे होगा क्या? यू हैव टू प्लान योर स्टडी. वो बात बोलते थे, पता है आपको, ज्याच्याजवळ प्लॅन नाही, प्लॅन असलेला मूर्ख हा प्लॅन नसलेल्या शहाण्यापेक्षा जास्त हुशार असतो असं म्हणतात. That's why you have to precise planning to study all this, not only maths and reasoning. If you are giving any competitive examinations, you have your own study plan. Okay, because the only person who can understand your ability is only you. हमारा क्या, हम इन जनरल बोल देंगे कि भाई ऐसा करो, ऐसे करने से मार्क्स आएंगे, ऐसे करने से मार्क्स आएंगे. ये हमने क्या किया है, इन जनरल सभी स्टूडेंट्स को उसको अप्रिशिएट करने के लिए, मतलब उनको वो सुटेबल होना चाहिए, इसलिए हमने वो इन जनरल स्ट्रेटेजी बोली हुई रहती है. बट यू आर द ओनली पर्सन who can understand the ability of your own potential to understand the every subject. Understood? So you have to plan to get success in your examination. Set your targets, set your daily planning, set your daily topics. Which subject you have to study. Suppose आज कौन सा डे है, ट्यूसडे, थर्सडे, राइट? फॉर थर्सडे what subject you are going to study? You have to know this before start your day. If you want your success, you want your success in your examinations, then you have to plan your study accordingly. You have to set your goal first. First of all, you have to set your goal in your mind. Suppose इन जनरल एक सेक्शन है, कैसे है, जो भी एमपीएससी का एस्पिरेंट है, जो भी कॉम्पिटिटिव का एस्पिरेंट है, उसके दिमाग में एक उसकी ड्रीम पोस्ट रहती है. एवरी एस्पिरेंट इज हैविंग हिज ओन ड्रीम पोस्ट इन हिज माइंड. बट आसानी के लिए हमने क्या बोल दिया है, जो भी पोस्ट पहले मिले वो ले लो, राइट? But if you are having your dream post in your mind, then plan for it. Just go for it. Just understand how many subjects are there, how many days you are having in your hands for the subjects, then how many days you can read all the subjects, then for the revisions, how many revision you can proceed for your examinations, then how many test series you can solve in that. You have to plan this accordingly your abilities. Just understand your abilities, how can stretch you can stretch your body, then accordingly you have to plan your study. Just set the goal first. What is your goal? You have to set in your mind first. Then go through the syllabus. Okay, we are having this strategy in this slide also. Okay, then you can go through the syllabus. Just first of all, to start the preparation of any examination, just go through the syllabus. Pre, mains, interview, whatever systems is there, what are the steps are there, just go through it. What is the exact syllabus? Don't read the highlighted points. Read the whole syllabus. In prelims you are having just your स्टॅटिक्स, अंकगणित, सांख्यिकी एवढंच दिलेलं आहे तुम्हाला सिलेबस मध्ये. अरिथमॅटिक सेक्शन, वी आर हॅव्हिंग एनी सिलेबस इज देअर? नो. डिटेल सिलेबस इन सिलेबस काय डिस्क्राइब्ड बाय आयोग, वी आर हॅव्हिंग? नो. ओके. फॉर हिस्ट्री you are having a detailed syllabus. In preliminary, no, but in mains you are having a detailed syllabus. Then go for this. Read thoroughly. Just go thoroughly your syllabus. What are the subjects are there for prelims? What are the subjects for mains? Then what is the weightage for interview, each if they are applicable.
interview is there applicable, then go for the its weightage. For combined examination, we don't have any interview. For PSI post only there is the interview. Other rest of all posts there is a no interview for the combined examination in group B and group C. For the PSI you are having physical test is there and interview section is there. Okay, understood? Yes. So your first target today, just go through the whole syllabus, pre mains both. Afterwards see the path to high scores. कैसे करना है हमें हाई स्कोर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो decode the complete syllabus. What they said? Decode. Every word is having its own meaning, right? Decode the syllabus. हमें क्या दिया है? अरिथमेटिक सेक्शन और कैलकुलस पार्ट. ये सिलेबस में इतना ही दिया. उसमें चैप्टर क्या है दिया है क्या? तो हम कैसे ढूंढेंगे उसको? जस्ट गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. Okay, that's why PYQ also plays an important role in your examination. To understand the syllabus, to understand the depthness of the subject, and to type of the questions, what type of questions आयोग is going to ask, और आयोग ने पहले कैसे पूछा है, आयोग ने हम लोगों के लिए क्वेश्चंस क्या डीपनेस ने पूछा है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल हमें रखनी चाहिए, ये कहां से पता चलेगा? ये सिलेबस से. That's why decode the syllabus. This is the most part in your competitive examination. Then apply the 80-20 priority rule. अभी हमने क्या बोला? सिलेबस कैसे समझ में आना है आपको? PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको सिलेबस पूरा समझ में आएगा. If you read PYQs from just consider for 5 to 10 years, last 5 to 10 years, just understand the process. ठीक है, देखो जितना पुराना आप पेपर देखोगे उतना इजी आपको लगेगा. ठीक है, जितना पुराना आप देख लो, जीएस के कोई भी पेपर निकालो 2019 के 2019 के पहले, बहुत इजी लगेगा आपको, बहुत इजी. आफ्टर 2019, आफ्टर कोविड, सबके क्या बोलते हैं, दिमाग के खुल गए सबके. तो आयोग ने क्या किया, पूरा 2019 के बाद आयोग इज आस्किंग ऑन कंसेप्ट्स. आयोग ने आफ्टर 2019 आयोग see the papers. If you see and understand the question pattern, then you can learn. The आयोग is asking on your concepts. Most of the questions are related with your concepts. See 2026 paper. Whole paper is based on your conceptual understanding. That's why just this is the important part for every subject. Learn the concept. रट्टा मत मारो भाई किसी में भी. अभी रट्टा मारने के टाइम गया आपका. अभी कंसेप्ट क्या है समझ लो. कंसेप्ट के अंदर आपको क्या करना है, उसको कैसे आप मॉडिफाइड कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको लर्न करना है, उसको बाय हार्ट करना है तो कैसे करेंगे, उसमें न्यूमोनिक्स क्या यूज करेंगे आप. न्यूमोनिक्स बोले तो ट्रिक्स, जो हवा चलती है ना, ट्रिक्स बता दो, ट्रिक्स बता दो. ट्रिक्स के पीछे कब भागना है वो भी मैं बोल दूंगा. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, देन डोंट गो फॉर द ट्रिक्स. Just apply the tricks only if you understand the concept. Otherwise, don't go for the tricks. First, we will discuss later. Okay, execute the 90-day blueprint. I am saying 90-day. You can adjust it with your own schedule. You can. This is the flexible 90 days, 100 days, 120 days, 160 days, 180 days. It's up to you how you can schedule your study. It's up to you how you can utilize your subjects, how you can utilize your time, and how you can
understand the concept. Accordingly, you have to change this 90 day. ये आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं कि 90 डेज में खत्म ही करना है भाई आपको, नहीं, आपको कैसे करना है आप डिसाइड करो। मैं जो बताऊंगा एक जनरल स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि भाई हमें ऐसे पढ़ना है, अगर आप ऐसे कर रहे हो, फुल टाइम स्टडी कर रहे हो तो ऐसे फॉलो करो। इफ यू आर हैविंग अदर प्लान्स then you can adjust it with your own, right? But it's up to you. So that's why execute the blueprint. जो आपने कुछ पेज पे प्लानिंग किया है, सिर्फ प्लानिंग करके मत रखो अंदर, उसको एग्जीक्यूट करो। डेली चेकलिस्ट बनाओ कि मैंने किया है या नहीं, I did this or not. If did, then right. If not, then make it cross. Then ask yourself why you are not doing this. Why? मेरे आज के 10 प्लान्स है, उसमें से मेरे 8 हो गए, तो मुझे खुद को पूछना चाहिए ना बाकी के 2 कैसे नहीं हुए। If you are studying for the competitive examinations, the exam is not for the post only. The exam is for yourself also. To develop yourself, you have to ask yourself daily, either I am completing my schedule or not. If completed, then I am happy. If I am not completing, then why? Why I am not doing the regular procedures for the success and all the things? You have to ask yourselves. Every day you have to ask. Before sleeping, when you are going to bed to sleep, then you have to ask yourself, हाँ आज मेरा ये प्लान था, मैंने कंप्लीट किया या नहीं? Just ask yourself. Track your studies. कोई आके पूछने वाला नहीं है भाई तूने किया या नहीं। दुनिया बहुत जालिम है भाई, आप मानो या ना मानो, आपको एक्सपीरियंस आएंगे कंपेटिटिव में, दुनिया बहुत जालिम है। यू हैव टू स्टडी। कोई आपका भला करने नहीं आएगा, आपको आपका खुद का भला खुद करना है, इतना समझ लो। सो शेड्यूल योर स्टडी प्लान, जस्ट देन आस्क योरसेल्फ either I am completing with my study schedule or not. If completing, then good. If not completing, then ask yourself why you are not doing this. Okay, these are 3 key factors. Next, mapping the complete syllabus plan. ठीक है, your first part is what was your first part? Decode the complete syllabus. So I'll make it easy for you. This is your syllabus for maths and reasoning. This is for maths and this one is for reasoning. I did your first part. You have to do rest all. Good? Yes. For maths, what we are having? We are having number system. Basic. एकदम बेसिक से शुरू करना है भाई. What are the prime numbers, whole numbers, natural numbers, divisibility test? Yes, this is the basic. We have to start from the basic. See, आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, बराबर है? कुछ ग्रीन में है, कुछ ब्लैक में है, कुछ ब्लू में है. वो क्यों है मैं लास्ट में बोलता हूं, ये इतना होने के बाद. राइट? सेकेंड, एलसीएम एचसीएफ, लसावी मसावी काढा. This is the major part. Then fraction. Which fraction is greater? Which fraction is smaller? Multiplication of fractions, addition of fractions. Okay. Then indices. Indices बोले तो क्या आएगा? आपको एग्जाम्पल दिखते हैं कई बार, खास करके सरल सेवा एग्जाम्स वगैरह जो है उसमें आपको दिखते हैं. 2 4 प्लस 2 3 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय 2 5, ऐसा कुछ तो दिखता है. एंड कैलकुलेट द आंसर. सो यू हैव टू नो द इंडाइसेस. व्हाट इज इंडाइसेस, व्हाट आर द रूल्स फॉर द इंडाइसेस, एंड व्हाट वी कैन परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, multiplication, division in this section.
Afterwards, equation with two variables. इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स. एक क्वेश्चन है भी 2026 में आयोग ने एक क्वेश्चन भी पूछा है, उस पर एक्स एंड वाई दिया हुआ रहता है सीक्वेंस में, आपको ढूंढना है. बराबर है. एक मिनट मैं दिखाता हूं आपको. इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, दिस वन है. See, back to our main part. Averages, ratio and proportion, ages, mixture, partnership, allegations, right? Afterwards, percentage, profit loss, simple interest, compound interest, time and work, pipes and cisterns, speed, time, distance, boat and streams, permutation, combination, probability, mensuration, geometry, algebraic expression, arithmetic and geometrical progression, basic and miscellaneous, and data interpretation. This is the list of our topics which we are going to learn in this batch. This is the syllabus for your mathematics, statics part, arithmetic. Okay. Then for reasoning, logical thinking and logical reasoning, what topics you have? Number series, alphabet series, then analogy, classification, coding, decoding, blood relations, puzzle test, direction sense test, Venn diagrams. Afterwards, ranking, mathematical operations, missing character, data sufficiency, figure series, mirror images, water images, paper folding, completion of incomplete pattern, paper cutting, cubes and dice, counting figures, clock, calendar, statements and conclusions. आता बघा, आपल्यात वेगवेगळे कलर आपण का यूज केले? What we saw? Apply the 80-20 priority rule. Okay. Decode the complete syllabus. We done this part right now. Now apply the 80-20 priority. For decide, you have to decide what are the priority, which topics are on the top and which are the at least. Okay. This green color topics are having most probability or most weightage in examinations from 2020 or 2021 to 2026. Ayog is repeatedly asking and focusing on these subjects, these topics. That's why they are in green sea. They are having rating 5 star. For the chapters, those who are in blue color, they are having 4 star. आयोग उस पर भी पूछता है, बट एक आध एग्जाम में नहीं पूछा है. जितने भी आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, वो सब टॉपिक्स जो है वो आपको करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट. मुझे आता नहीं, मुझे समझता नहीं, वो भाई देख ले कैसे करना है. For 80 and 20 priority rule, the topics which are in color coding, they are having 80% priority, and rest all are having a 20% priority. But you have to learn all the chapters while studying. Just for the preparation, you are starting the preparation, right? Then for the first time, if you are learning this, then go through all the chapters. Once you can understand all the concepts, all the facts in these topics, then you can go for the 80 and 20% priority. But पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? पूरा सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करके लेना. For the both maths and
reasoning, for both subjects you have to apply 80-20 priority. Don't waste your time in the topics which are not asked in the examination. But कैसे करना है, मतलब करना नहीं है मतलब पढ़ना नहीं है ऐसे नहीं है भाई, पढ़ो, पहले पढ़ो. अगर आप पहले स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई पूरा, तो पहले पूरे टॉपिक्स पढ़ो, उसके बाद डिसाइड करो 80-20 क्या है. क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूं सब पहले पढ़ के लो, क्यों बोल रहा हूं, कंसेप्ट सभी टॉपिक्स के समझ लो पहले. क्यों, we are talking about which exam, we are talking about combined group B and C, right? Right. For this exam we are having this color coding, for another exam it should be different, right? Now understand? See, for Saral Seva Bharati you have to focus on LCM, HCF, fractions, indices, so priority changed, no? According to exam your priorities changed. So we are talking about combined. That's why we are having these topics on our priority list. But exam is changed, then priority also changed. Accordingly, you have to decide. That's why I am saying कि बाबा पहले पूरे सब्जेक्ट, पूरा चैप्टर, पूरा जो कुछ है वो लर्न कर लो, पहले कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद आप प्रायोरिटी डिसाइड करो. बराबर? Yes. For reasoning, same. Those who are having a color coding green and blue, these are in the our priority list. 80 priority and rest all in the 20% priority. See, again I am saying before 2019, what I am saying before 2019, if you see papers from 2017, 16, 17, 18 and 19, you can see the problems on paper cutting, cubes and dies, paper folding. In every exam you can see 2 to 3 questions on these topics, but now we don't see this. Why? Pattern is changed. आयोग को पता है बच्चों को ये कैसे करना है, सॉल्व करना है, पता चल गया कैसे इसमें इजी जाना है, कैसे करना है. नाउ आयोग इज आस्किंग ऑन कंसेप्ट. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कंबाइन में पहले ये डिसाइड कर लो, आपको मैं जो बोल रहा हूं वो क्यों बोल रहा हूं वो भी बोलता हूं, ठीक है. दिस इज आवर सिलेबस, वी डिड दी 2 parts. Which one? Decoding the syllabus and deciding the 80-20 priority. We done this. Now for the your strategy to study the maths and reasoning, what should be your strategy? Your phase first is concept building. इसको आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, जैसे फोकस करना है करो. Your first phase is concept building. Understand the each and every topic, understand all the concepts, and then go for the your practice session. Suppose if you are studying averages, if you are studying for the averages, then just understand all the concepts. Then understand all the concepts, and afterwards go for the practice. After this, go for the listing out the formulas. Listing out the formulas. Why this? List क्यों बनाना है? That's it. When you are having your free time, then you have to revise your formulas. See, जितना भी टाइम हो सकता है उतना यूटिलाइज करो. जितना भी, कैसे है अभी हमारे सामने कोई एड आई हुई नहीं है, इसलिए हम बहुत रिलैक्स रहते हैं. वी आर हैविंग वेरी रिलैक्स माइंड. व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच प्रेशर, बिकॉज एड इज नॉट देयर.
we are thinking about in examination in 2027, करेक्ट है ना? तो हमारे पास कितना साल है, कैसे कंसिडर किया है हम लोगों ने? अभी के एग्जाम से, जून में एग्जाम हुए ना, तो अगले जून में हमारे एग्जाम है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। हमें पता है कि एग्जाम कब आने वाली है? नहीं। What MPSC declared? MPSC declared they are going to conduct 2 to 3 prelims in each year, and for all the prelims they are going to conduct only one means at the end of the year. So if you are considering or you are thinking about 2027, just think about it. You are having 2 to 3 prelim examination for combined group B, combined group C. अगर आयोग को 2 से 3 प्रीलिम लेने हैं तो आयोग जून में लेगा क्या? पहले भी आ सकते हैं ना? दिस इज द फैक्ट, गो विथ द फैक्ट, अंडरस्टूड? देन यू हैव टू प्लान योर स्टडीज फॉर द नेक्स्ट 8 months, मिनिमम 8 months. You have to plan your study accordingly for your next 8 months. You have to start your preparation today itself. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. क्यों? ये क्या चेंजेस होने वाले कोई नहीं बता सकता, आयोग को कोई भी नहीं पढ़ सकता, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. So accordingly plan yourselves, accordingly plan your study for next 8 months. You should be ready for next examination in your next 8 months. You are having minimum approximate time is 8 months for your preparation. In that you have to learn all the subjects, you have to did your preparations, you have to practice your test series. दिस सब सिनारियो किस में आएगा? ये 8 मंथ में आएगा. ओके, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स. मैं कुछ बड़ा बड़ा नहीं बोलूंगा कि ऐसे करो, इतना टाइम में ऐसे होगा, वैसे नहीं बोलूंगा. ये फैक्ट है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ाई करनी है, जितनी जल्दी हो सकता है पोस्ट ले और यहां से निकलो. अंडरस्टूड? डोंट वेस्ट योर टाइम. Then this is the standard strategy, generalized strategy. You can change it according to yourselves. Not, it's not compulsory to you to follow this one. Just this is the generalized strategy. You have to follow or you have to change it accordingly your study schedule. Because स्टूडेंट के दिमाग में कैसे चलता है? अभी मैं कितना भी यहाँ पे बोलूं, कुछ भी बोलूं, लाइब्रेरी में अगर जाते हो तो बाजू में क्या कर रहा है? ये पढ़ रहा है, मुझे भी ये पढ़ना चाहिए क्या? योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग विथ दैट वे. ओके, सो बच्चों का कैसे रहता है कि मुझे जीएस को ज्यादा टाइम देना है, मैथ्स एंड रीजनिंग में कम दूंगा. भाई चलेगा, नो इश्यूज, बट आप स्टडी आपके शेड्यूल में कंप्लीट करो. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडी इन टाइम. अकॉर्डिंगली आप इसे चेंज कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि मैंने बताया तो इस ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो पास होगे, नहीं ना भाई. ये जनरलाइज मैंने बोला है. दिस इज द जनरलाइज प्रैक्टिस. यू हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंगली योरसेल्फ. ठीक है? फर्स्ट 2 hour मैथ्स, 1 hour रीजनिंग डेली. You can change it accordingly. Just first you can go with the maths or either reasoning. It's up to you. If you are going with the reasoning, then your confidence level should be high. Why? Because reasoning is easier. You don't have to do the calculations. बराबर है? कैलकुलेशन बोले तो पहले हमको डर लगता है, बराबर ना? तो पहले क्या करना है? कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, स्टार्ट विद द रीजनिंग. इट्स अ वेरी इजी पार्ट. गो विथ नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज. Once you are getting
interest in this to study, and then you can go with the modifications, go with mathematics. It's up to you. Just build your confidence. Firstly, just do first thing is you have to build your confidence to study this subject. ये सब्जेक्ट में बच्चे पीछे क्यों है? बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस कम, लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस. कितनी भी प्रैक्टिस, एक स्टूडेंट है मेरा, जाने दो, एक स्टूडेंट है, ठीक है, अभी बोलता हूं आपको, उसने 4 महीने तक, 4 महीने तक, ये कंबाइन जो हुई तो 4 महीने तक उसने मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस की है बहुत. बट फिर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका लूज है, इस वजह से उसको मार्क कम आए. और एक बंदा है वो फुल कॉन्फिडेंस में है, उसका मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत अच्छा है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है उसने. आउट ऑफ 20 he solved 18 question and all are right. So what is the difference? So build your confidence first and then go with the more practice. First, what is that? Prioritize deep understanding. What I am saying, deep understanding over short tricks. पहले अंडरस्टैंड कर लो जो मैंने पहले ही बोला है. Understand the concept and then go with the tricks. Don't go just, if you don't know the concept, ठीक है, स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर आपको करना है, कोई भी अभी 111 स्कोर, इसका स्क्वायर क्या आएगा? अभी आपको इसका कंसेप्ट ही नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, ये तो जनरल बेसिक होगा ना, बट ट्रिक क्या है उसमें? ये एक जितनी बार आया है उतने बार उसके नंबर्स लिखो. 1 2 3 आया तो देन गो ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर. दिस इज द स्क्वायर फॉर 111. ये ट्रिक है. कब आएगी? अगर आपको जब स्क्वायर कैसे करना है पता है तब. राइट? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट देन गो विद दिस वन. आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस ऑल द ट्रिक्स विद दिस चैप्टर्स. पहले क्या होगा? कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट खत्म होगा, उसकी प्रैक्टिस होगी, उसके बाद ट्रिक्स आएंगे. ये स्टेप से हम जाने वाले हैं. ठीक है? अब 45 का स्क्वायर क्या आएगा? इसकी ट्रिक क्या है? जस्ट डू द स्क्वायर ऑफ 5 25 एंड फॉर द 4 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 एंड 5. इसके आगे का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो और उसका आंसर वहां पर लिखो. ये रहा स्क्वायर 45. अब ये दो ट्रिक्स किस लिए? 111 जिसमें है उसके लिए और 5 जिसमें लास्ट डिजिट है उसके लिए. राइट? हाँ. फॉर 43 क्या करोगे भाई? अगर हमने स्क्वायर्स लर्न भी किए, बाय हार्ट भी किए, तो हम कहां तक करेंगे? 30 तक. ये उसके ऊपर का है 43. कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक फॉर्मूला है. कौन सा है? a प्लस बी स्क्वायर. सॉल्व करो उससे. बट ये कब आएगा? अगर आपको एक बार कंसेप्ट पता चले कि क्या है, कैसे करना है, उसके बाद ये सब उसमें आएगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द टॉपिक्स विद बेसिक कंसेप्ट्स, practice and then tricks. Okay, this is our lecture flow. Then second phase, intensive practice. इसको क्या करना है? स्टार मार्क करना है, IMP करना है, जो कुछ करना है आपको करो. बट ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज, इंटेंसिव प्रैक्टिस. क्या है? solve 100 plus questions daily. So you can minimize it according to your study timings. You can solve 50 questions, sufficient. But you have to solve it daily. You have to practice for 50 questions daily. Next, comprehensively solve last 5 years papers. क्यों बोला मैंने भी? 5 to 10 बोला ना मैंने. क्यों बोला? जो लेटेस्ट पैटर्न है वो अगर आपको समझना है तो उसके लिए क्या करना है आपको? मिनिमम एटलीस्ट 5 इयर्स के पेपर तो सॉल्व करो. यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 5 इयर्स प्रीवियस पेपर्स. नेक्स्ट, मेंटेन अ डेडिकेटेड एरर नोटबुक. क्या है?
एरर नोटबुक. अगर हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, यू लर्न द कंसेप्ट एंड यू आर गोइंग फॉर द प्रैक्टिस, then you have to note down your errors which you are getting in your practice. सपोज आपने कैसे होता है बोलता हूं मैं, प्रैक्टिस के दौरान हम लोग क्या करते हैं, बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं. तो हम क्या करते हैं, 4 into 5, 4 5 20, ये हमें भी पता है. बट हमारे पीछे कुत्ता लगा होता है उस वक्त प्रैक्टिस के वक्त, तो हम क्या करते हैं, 4 5 16, खत्म, आ गया गलत. तो जो भी एरर्स हम लोग फेस कर रहे हैं प्रैक्टिस के दौरान, उसका एक नोटबुक बनाना. जस्ट नोट डाउन योर एरर्स एंड वर्क ऑन इट, अवॉइड इट इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस. Phase 3, revision and simulation. What is that? Full mock test paper per week, master time management. This is the most important thing. We are talking about this afterwards. Master time management, systematically resolve incurrent questions. इनकरेंट क्वेश्चंस हमने जो भी सॉल्व किया उसको क्या करना है, उसको रिसॉल्व करो. घर पे बहुत टाइम रहता है, टेस्ट में ठीक है, हमारा टेस्ट में हमने टेस्ट सीरीज दिया है, हमारा टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं. बट अगर एक कोई मिस्टेक टेस्ट सीरीज में हमसे हुई तो उसे अवॉइड करो, सिस्टमेटिकली कैसे सॉल्व करना है लर्न करो, क्योंकि वो जब आप मेन एग्जाम में जाओगे, प्रीलिम में, एमपीएससी के आयोग के इसमें, तो वो आपको अवॉइड करना है. इट हेल्प्स टू अवॉइड. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइम मैनेजमेंट. How much time you are having in the examination to solve the question? 1 hour. What I am asking, how much time you are having to solve single question in examination? ठीक है? Are you getting? How much time you are having? 36 seconds. 36 सेकंड में आपको पूरा याद करना है, क्या पढ़ा है हमने, क्या नहीं, उसके हिसाब से उसको मार्क करना है. फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग, अंडरस्टैंड why I am saying this, practice, you have to do more and more practice. Why? Because of this, you are having only 36 seconds to solve each question in the examination. If you have to solve it in 36 seconds, then you have to do more and more practice. That's why I am saying sharper and sharper. Understood? आपको शार्प बनना ही है. वो कैसे बनोगे? प्रैक्टिस के. Just do more and more practice. That's why here I am saying solve 100 plus questions. अब प्रॉब्लम कहां से लाएंगे हम लोग, इतने सारे, मार्केट में बहुत सारे बुक्स है. फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक. In that you are having all the questions of previous years from 2012 to 2026. How many years they are having here? 14, right? 14 15 years. पहले ये तो सॉल्व करो. अगर हम लोग ये भी सॉल्व करते हैं, ग्रुप बी एग्जाम, ग्रुप सी एग्जाम कंसिडर करो, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे पर चैप्टर? एटलीस्ट कंसिडर 25 ईयर्स. हर एक चैप्टर पे हर साल में एक ही क्वेश्चन पढ़ो, 25 क्वेश्चन तो हो जाएंगे हर एक चैप्टर पे. गेटिंग माय पॉइंट? देन गो विद द बुक्स. यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ बुक्स. ओके, नेक्स्ट. गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी? पहले क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद क्या करो, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करो. कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस एंड देन इंप्लीमेंट. नेक्स्ट, व्हाट वी आर हैविंग, द डेली इंजन.
डेली आपको क्या पढ़ाई करनी है, कैसे करना है, वो बोला है, मैंने पहले ही बोला, यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली योर एबिलिटी, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली योर स्टडी शेड्यूल. जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी टू फॉलो दिस ओनली. You can change it accordingly your study schedule. This is generalized strategy, those who are having full day time for the preparation. First, for the 1 hour you have to learn mathematics concept building. In next 1 hour mathematics practice and execution. जो भी यहाँ पे हमने कंसेप्ट बिल्डिंग किया है, कंसेप्ट लर्न किए, उसको हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है. You have to execute your concepts in your practice, right? Next, in 45 minutes learn the reasoning concepts, and then for 30 minutes just decode the previous year questions, and last 15 minutes for the formula revision. फॉर्मूला रिवीजन जरूरी नहीं है ऐसे ही होना चाहिए. आप ऐसा कर सकते हो, डेली 1 चैप्टर फॉर द मैथ्स. पहले एक सब्जेक्ट लेना है हमें, पहले हम मैथ्स करेंगे खत्म, उसके बाद हम रीजनिंग करेंगे, या हम लोग पहले रीजनिंग खत्म करेंगे उसके बाद मैथ्स खत्म. इट्स अप टू यू. टेक डेली 1 चैप्टर आल्सो. जस्ट लर्न द कंसेप्ट फॉर फर्स्ट डे एंड सेकंड डे यू कैन प्रैक्टिस. ये भी हो सकता है, पहले हम लोग पहला सब्जेक्ट खत्म करेंगे, पहले मैथ्स या रीजनिंग कोई भी एक खत्म करेंगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट खत्म करेंगे. तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमको एक ही दिन में एक चैप्टर खत्म करना है तो कैसे करेंगे भाई, पहले 2-2.5 घंटे दो खुद को, कंसेप्ट लर्न करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो झट से उसी दिन. ये भी हो सकता है. देयर आर नंबर ऑफ वेज, just you have to find it for which is better one for you. Understood? There are number of the ways, you have to understand which one is better for myself and I have to apply in my schedule. Getting? Next, this is your daily engine for study. You can study it for the, you can change it accordingly subject wise. क्या करना है, डे 1 कंसेप्ट, डे 2 प्रैक्टिस. ऐसे भी कर सकते हो. अभी इसमें एक सेम पार्ट क्या रहेगा दोनों में, यू हैव टू लिस्ट आउट योर फॉर्मूलाज. This is the common thing in both. Either you go with this one or you can go with this one. But this is important, or this is must you have to do. You have to do daily 1 subject or 1 chapter for maths or reasoning. You have to practice for it daily basis. It should be compulsory. Yeah? If you want success in very short time, in short time you want your success, then just study it for the daily basis. मैथ्स एंड कुछ भी करो, मैथ्स एंड रीजनिंग डेली बेसिस पे स्टडी करो. अगर आपको सक्सेस जल्दी पाना है तो. नेक्स्ट वन, ठीक है, स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट फॉर स्टडी, बिल्डिंग द फॉर्मूला वॉल्ट. क्या करना है उसको, टूल 1 क्या है, फॉर्मूला वॉल्ट में हमको फॉर्मूलाज बनाना है, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला हमें बनाना है. पहले उसमें क्या करना है, क्रिएट अ डेडिकेटेड पॉकेट साइज नोटबुक फॉर कोर फॉर्मूलाज. For the core formulas you have to make it one short diary. You can use short diary also. In that, just chapter wise you can list your list of formulas. While you are going for the tea break, for the lunch, for the dinner, you can repeat it or revise it with your time. Just निकालो भाई पॉकेट से अपनी डायरी, रीड करो. It's up to you how much you have dedication in your studies. It's up to you.
दिस इज वर्क, दिस स्ट्रेटेजी वर्क विथ योर डेडिकेशन। जस्ट हमें दिमाग में आए कि हमने ऐसी बनाई है, बस उसमें लिखा कुछ नहीं, उसका कुछ फायदा नहीं। नेक्स्ट, क्या किया है? कमिट। क्या करना है? कमिट करो। कमिट स्ट्रिक्टली टू अ 10 मिनट डेली रिवीजन। इसमें क्या किया है? रिचुअल किया है। 10 मिनट डेली रिचुअल जो रहता है अपना, भाई भगवान के पास जाओ, भगवान हमें पास कर दो, हाँ वैसे एक 10 मिनट का रिचुअल बनाओ, भाई ये फॉर्मूला है, हमें एग्जाम में याद आओ। ठीक है, डेली रिवाइज करना है एज अ डेली रिचुअल। यू हैव टू रिवाइज इट, लर्न इट एंड रिमेंबर इट। नेक्स्ट, मस्ट इंक्लूड फॉर्मूला वर्ड टॉपिक्स। आपके टॉपिक्स फॉर्मूला लिस्ट में जो फॉर्मूला वर्ड की डायरी बना रहे हैं उसमें कौन से टॉपिक होने चाहिए? मोस्टली परसेंटेज फ्रेमवर्क्स, परसेंटेज के जो भी फॉर्मूलाज है, उसमें एक प्रॉब्लम है, आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, परसेंटेज के जो फॉर्मूला है वो। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशंस, जो भी इक्वेशंस है, अगर प्रॉफिट बनाएंगे तो कैसा है, दोनों सेम लॉस पे बेचेंगे तो कैसा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर दोनों सेम प्रॉफिट पे बेच रहे तो कैसे प्रॉफिट होगा, एक प्रॉफिट पे बेच रहे एक लॉस में बेच रहे तो क्या होगा, ये कैसे, अगर ये हमें जल्दी सॉल्व करना है तो कैसे करना है? फॉर्मूलाज पे आएगा ना, बट इसमें भी ट्रिक फॉर्मूलाज भी आएंगे बाद में। फर्स्ट यू हैव टू नो द बेसिक फॉर्मूलाज, देन गो विद द ट्रिक फॉर्मूलाज। Understood? Then time work ratios, this is the most important one, na? This and this, time and work ratios. Then core geometry formulas. Now Ayog is focusing on this, MPSC is focusing on this geometry part. In every exam from last year, group B and group C, every exam Ayog is asking 2 to 3 questions on geometry. Understand the importance of geometry. So you have to know the formulas regarding with rectangle, parallelogram, triangle, square. You have to learn at least these figures. You have to learn what is the area, what is the perimeter. You have to know this. Quadrilaterals and all. Then the strategic blueprint for study, tool 2, decoding the pattern. This is the important with PYQs. What we have just discussed, you have to go through the previous year papers, at least minimum 5 to 10 years. I am saying 5 to 10. So analyze 5 to, see it's here, 5 to 10 years data. Solve comprehensively, not casually. ऐसे सामने देखा, हाँ ये ऐसे ऐसे नहीं भाई, सॉल्व करो, उसके स्टेप्स क्या है पता करो। ठीक है, नेक्स्ट, अंडरस्टैंड द एग्जामिनर। इसमें क्या दिया? आयोग के जो एक्सपेक्टेशंस है हमारे ऊपर कि हमें क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम उसमें आते हैं क्या? वी आर क्रैकिंग द एग्जामिनर माइंड और नॉट? This is the most important thing in the examination. Then identify recurring types. Spot and document specific archetypes. जो कुछ रिकरिंगली रिपीटेशंस है आयोग के, वो सब्जेक्ट फॉलो करो। जो हमने 5 स्टार किया है, 4 स्टार किया है सिलेबस मैपिंग में, बराबर ना? ग्रीन कोडिंग, ब्लू कोडिंग, ब्लैक कोडिंग, व्हाट वाज दैट? दैट वाज द दिस वन, रिकरिंग टाइप पैटर्न. You have to go with that one. Next, what is the next? Battle simulation, the golden rule, mock test accuracy targets. Golden rule क्या है? Focus entirely on 100% accuracy first. This is the most important thing to understand the maths and reasoning, or to learn maths and reasoning. पहले accuracy पे focus दो. हमें मार्क्स कब मिलेंगे? What we said, maths and reasoning are having a potential of 80 to 90% to get more score, right? More score, right? But when
when we are having our accuracy, then first part is go with your accuracy first. कितने स्टेप्स है पहले, सपोज हमें टाइम एंड वर्क करना है, एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, दूसरा आदमी दूसरे दिन इतना काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, भाई पहले स्टेप्स क्या है वो पहले कर लो, ठीक है, उसके जितने भी स्टेप्स आएंगे 4 5 6 जितने भी स्टेप्स हैं पहले उतने स्टेप्स करो, लिखो पेपर पे, एक्यूरेसी लाओ कि इसका आंसर आया, अगर ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर कैसे निकालना है, get the accuracy 100%. Then afterwards you have to push yourself for the speed. Then you can omit 2 or 3 steps, they can get direct. You can solve it with 1 2 3 steps only, omit 3 or 4 steps in that one. But when you are getting your accuracy, then you can push yourself for the speed. Okay, then deep post test analysis is non negotiable. कोई भी आपको एनालिसिस करना ही करना है, कोई भी गलती, छोटी सी छोटी गलती भी रही तो उसका एनालिसिस करना है, कोई भी। मैंने जैसे बताया कि 4 into 5 हाउ मेनी देयर, 20, 4 5s are 20, बट इन स्पीडी कैलकुलेशंस आवर दिमाग क्या करता है, ज्यादा चलता है, 4 5s are 16 लिख के आते हैं हम लोग, तो ये भी आपको एनालाइज करना है, मैंने क्या मिस्टेक की है वहां पे, छोटे से छोटे मिस्टेक भी आपको एनालाइज करने, यू हैव टू एनालाइज योर माइनर मिस्टेक्स. Then accuracy mathematics for target 85% plus accuracy, and for reasoning targeted accuracy is 90% plus, overall average is 80 to 90 in range. See how many questions are there in the examination, 20 questions for prelim, 22 for the mains, right? Your accuracy should be up to at least 15 questions. कितने आने ही आने, कुछ भी करो, if you want to crack the examination both prelim and mains, then your accuracy should be this one. If you are going for the prelims, then 15 क्वेश्चंस हमारे आने ही है, कुछ भी करो, और अगर हम लोग मेंस के लिए जाते हैं 22 क्वेश्चन के लिए, then our accuracy should be 70 to 18 questions, कुछ भी करो. In mains you are having more weightage than the prelims. In prelims you are having 20 questions, in mains you are having 22 questions, right? Yes, history के 10 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स 15, पॉलिटी 15, करंट अफेयर 15, साइंस 15, and maths and reasoning 20. How many subjects are there? 7. In prelim you have to learn 7 subjects including current affair. Okay, next, the ultimate synthesis equation. ठीक है, ये सब पूरा जाने दो, हमने अभी तक जो भी बोला है उसका क्या नतीजा है, क्रक्स क्या है उसका, ये 3 hours daily focus plus consistency, then outstanding exam score. If you want score in the examination, then you have to practice it daily basis and for with your consistency and accuracy. First of all you have to focus on your accuracy, then go with your speed, and then go with your consistency. You have to consistent in this, not only for 3 days 4 days 5 days, but for the whole schedule. जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको बेनिफिट रहेगा, उतने ज्यादा ट्रिक्स आप खुद भी बना सकते हो. इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग का एक बेनिफिट ये है, जितनी प्रैक्टिस हम खुद करते हैं उसके ऊपर हम ट्रिक खुद भी बना सकते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग, क्योंकि दिमाग उतना काम करना चालू होता है आपको, ये स्टेप्स में ऐसे आएंगे, अगर इसको ओमिट करेंगे तो इसका क्या करेंगे, ये सोचना पड़ता है अपने. दैट्स व्हाई you can also create your own trick in this one. That's why this is the interesting subject, maths and reasoning.
This is the important for every examination, because every examination has a maths and reasoning with its own weightage and own importance. That's why you have to learn maths and reasoning very sincerely. Okay, what is this? Game changers that determine final selection and merit position. इतनी देर से हम लोग जो भी बकबक कर रहे हैं वो क्या है? ये इसी के लिए चल रहा है, फाइनल मेरिट के लिए, बराबर है ना? किस पे डिसाइड करेगा? आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के मार्क्स के ऊपर। कोई भी एग्जाम होने दो, ऑल ओवर इंडिया कोई भी एग्जाम दो, यूर स्कोर इज डिसाइडेड बाय मैथ्स एंड रीजनिंग, either you are in the final merit list or not. It's decided by maths and reasoning. That's why just go with accuracy. देखो मैं आई एम टेलिंग यू, ठीक है, कौन क्या हाथी चले बाजार कुत्ते भोके हजार, ऐसा रहता है। हम लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपना फोकस रखो। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जामिनेशन, देन आई हैव टू फोकस ऑन माई प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, मैं पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहा हूं, मैं स्लो कर रहा हूं। कोई तो आके होशियार कोई तो आएगा बाद में बोलेगा अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसको ऐसी ट्रिक यूज करना। डोंट चेंज योर फोकस। ट्रिक हमें करनी है, कब करनी है? पहले फोकस, पहले एक्यूरेसी, प्रैक्टिस एंड देन ट्रिक्स। एक बार हमें कॉन्फिडेंस आया ना, मुझे इस चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम सामने आ जाए मैं इसको सॉल्व करूंगा ही करूंगा। एक कॉन्फिडेंस कब आएगा आपका? इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट डेली बेसिस। इफ यू हैव प्रैक्टिसाइज योर on averages, you have to practice your, if you completed your 50 question practice session, then you are getting your own confidence that I am solving every question of this type or this chapter. Any question you can face after 50 question practice or 100 question practice sessions. Then you can check your accuracy for 100 questions, how many questions you solved it correctly. Then go with this, analyze it, what are your mistakes, and then go with your trick sections. Every chapter has its own tricks, ठीक है, वो हम सब देखेंगे, सब पढ़ेंगे। इसको ऐसे किया तो कैसे आएगा, पूरा सॉल्व करना है क्या, पेन पेपर लेके ही सॉल्व करना है क्या, या पेन पेपर कभी कभी नहीं लगता है, ये सब देखेंगे उसमें। कब? प्रैक्टिस होने के बाद। एक चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर खत्म होने के बाद लगे झट से नहीं पूछना है सर ट्रिक्स। हाँ, सर ट्रिक्स बोलेंगे, सर को पता है ट्रिक्स बताने के बाद ही बच्चे ज्यादा सिक्योर फील करते हैं आजकल, क्योंकि रील्स देखते हैं ना ज्यादा, बराबर। रील्स, ये ट्रिक है, इसकी ये ट्रिक है, इसकी ये ट्रिक है, बराबर। तो हम ट्रिक देखेंगे, कब देखेंगे? एक बार हम लोग पूरा चैप्टर सच पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ट्रिक्स पे जाएंगे। Yes. Now, these are the questions asked in the combined exam 2026. ठीक है, देखो अभी चैप्टर कौन कौन से आते हैं वो पहले देखो। क्वेश्चन का क्या पूछा है क्या नहीं वो देख लो। अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम ऑफ 10%। कितने, क्या है इसमें? क्या है इसमें? डिस्काउंट रहेगा या प्रॉफिट एंड लॉस पे रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस पे, राइट? प्रॉफिट एंड लॉस पे यह क्वेश्चन है। सी नेक्स्ट, दिस वन सिंप्लीफिकेशन, राइट? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यह कैसे सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन का? अभी इसका तो स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? ये भी हमें देखना है, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करना है मैं बोलता हूं एक बार। इसको आपको क्या करना है? 9 into 5, राइट? हर एक को आपको ये सिंप्लीफाई करना है ऐसे, 9 into 5।
दिस वन 49 into 5 बराबर है. This one. For this one 64 into 5 correct है. And for this one 36 into 5. Then you have to solve. What is the square root of 9? 3. So we can put it in this format. 3 into root 5 plus 7 into root 5 divided by 8 into root 5 minus 6 into root 5. हो गया इजी. Then just calculate it. Answer आएगा 5. Simplification. Square and square roots. Next one. This one. Geometrical part है. क्या दिया है? A rectangular strip has rectangle पे है. Rectangular strip has larger side 40 centimeter and diagonal 1 centimeter more than it. So अपनी rectangular क्या structure है? This one. We are having this is a 40, this one is 41. Then use Pythagorean triplet. Calculate this one and then go with the perimeter formula. 2 plus length plus breadth. 2 into length plus breadth. Right? Easy one. But you have to know the structure. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं लगेगी ना. 40 plus 41 कितना आएगा? 81. स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 बराबर है. मतलब we are having this one as 40 and this one as 9, means this one is also 9, right? We are having both the sides, length and breadth. Calculate the perimeter. 2 into length plus breadth. Good. कितना आया फिर? 98. 49 into 2. करेक्ट. पेन पेपर की जरूरत है नहीं. कब? अगर हमें कंसेप्ट समझ में आता है तो. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि गो विद द कंसेप्ट फर्स्ट एंड देन गो विद द ट्रिक्स, देन गो विद द स्पीड. कितना भी टाइम लगने दो. मैं अभी बोल रहा हूं, अगर आपकी एक्यूरेसी एंड कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट रही तो समझ लो आपने प्रीलिम क्रैक कर ली और मेंस भी क्रैक कर ली. पहले प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट बिल्डिंग करो, उसके बाद ट्रिक्स पे जाओ. कुछ स्टेप ओमिट कर दो, चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन. व्हाट इज दिस? रेशियो एंड प्रोपोर्शन. करेक्ट. This one is with ratio and proportion. Just look at the chapters. From which chapter? This is trains. Speed, distance and time. Right? This one, profit and loss. Again, next. Time and work. T and W. Correct? Then this one is compound interest and simple interest. This one is geometry. Correct? See. Then this one is percentage पे आएगा कि कैलकुलस पार्ट पे आएगा? कैलकुलस पार्ट मिसलेनियस में आएगा ना ये. करेक्ट है. मिसलेनियस पार्ट में आएगा. क्विज के फॉर्मेट में आएगा ना. पजल के फॉर्मेट में आता है सामने. 2-3 कंसेप्ट एक करके फिर इसको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट वन. दिस वन इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस. दिस इज द रीजनिंग पार्ट. राइट. दिस इज द रीजनिंग पार्ट. इन रीजनिंग यू आर हैविंग अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ठीक है. क्या दिया है? प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिविजन, डिविडेशन मीन्स सब्स्ट्रैक्शन, सब्स्ट्रैक्शन मीन्स एडिशन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन. इस पे ये पुट करो और वैल्यू करो. एक बार हमने इसको पुट किया तो उसको सॉल्व कैसे करना है? बाय रूल. राइट. दिस इज द पार्ट ऑफ रीजनिंग. आफ्टरवर्ड्स दिस वन, वेन डायग्राम.
अभी मुझे बताओ, इसके लिए आपको पेन पेपर की जरूरत है क्या? नहीं, कंसेप्ट क्या है समझ में आ जाए. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, you can solve it with your mind only. Next one, this one. Every time number of letters skipped, letter series पे, right? How letter are arranged in the sequence. This is the letter series. Next, this one, direction sense test. Correct है? This one is direction sense. This is the simplification with number system, puzzles. इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं. इसमें ट्रायंगुलर फॉर्मेट भी रहता है, स्क्वायर फॉर्मेट भी रहता है, सर्कुलर फॉर्मेट भी रहता है. वो सब हम लोग लेक्चर्स में देख लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन, दिस वन, नंबर सीरीज. Why number series and alphabetical series is green? That's why in each and every examination you are going to solve this type of questions, number series and alphabetical series. In every exam they are going to ask on this. That's why that is the in green, right? Understood? Next one, this one, statement and conclusions. स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. पहले आयोग क्या करता है, इसको सिर्फ राज्य सेवा में पूछता था सीसैट में. अभी आयोग क्या कर रहा है, ऐसे जो क्वेश्चंस है कंक्लूजन रहेगा या और कुछ दिएगा, आयोग देगा सेंटेंसेस, रीजंस भी देगा कुछ, तो उसके हिसाब से हमें ये सॉल्व करना है. तो ये एक तो क्वेश्चंस रहता ही रहता है ऐसा. तो वी आर गोइंग टू सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो. नेक्स्ट, दिस वन इज डेटा सफिशिएंसी. डेटा दिया है, कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या नहीं, ऐसा क्वेश्चन है. इसमें क्या है, सिर्फ टीचर्स का रहता है क्या? नहीं. इन दिस प्रोफेशन कुछ भी दिए रहते हैं, कुछ ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट दिए रहते हैं, कोई प्लेन से जा रहा है, कोई जहाज से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है. ठीक है. दिस वन इज डेटा सफिशिएंसी. सी इफ यू आर सीइंग दिस वन एंड दिस वन, एंड नॉट दिस वन. ठीक है. आपने अगर ये दो क्वेश्चन देखे तो इसमें क्या दिखता है आपको? व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन दिस वन, इन दीज टू क्वेश्चंस, दीज आर द लेंथी क्वेश्चंस, राइट? दीज आर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस. करेक्ट. अगर हमारे पास 36 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको पढ़ने में हमें 36 सेकंड लगेंगे ना. That's why we are focusing on our speed also. Why we are going with the tricks? To utilize the what time we saved in other examples. We have to utilize that one in this type of questions. Getting my point? This is the important thing. Just save your time where you can save it and utilize it in this type of speed breakers. These are using as a speed breakers. Why? These are time consuming. यहां पे ही दिमाग खराब हो जाए, कितना पढ़ना है, कब सॉल्व करूं. और हम लोग क्या करते हैं, मैसेजिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैसेजिंग एकदम एंड में सॉल्व करते हैं. पूरा पहले जीएस सॉल्व करते हैं, लास्ट में मैसेजिंग सॉल्व करेंगे. ये एग्जाम में कैसे हुआ पता है? ये जो पेपर हुआ है उसमें कैसे हुआ है, 45 मिनट्स तक स्टूडेंट ने सिर्फ जीएस सॉल्व किया और लास्ट के 15 मिनट में सब स्टूडेंट्स यहां पे आए सॉल्व कर. बात भी सही है, पेपर लेंदी है, पेपर वाज लेंदी, दैट्स इट्स करेक्ट. ठीक है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर गोइंग थ्रू द टेस्ट सीरीज फॉर टाइम मैनेजमेंट. वी सॉ दैट फॉर टाइम मैनेजमेंट यू हैव टू appear with your test series also. Why? You can understand how we can utilize our time, how our strategy should be in the examination hall. हमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या बनानी है पेपर सॉल्व कर दे. अगर ऐसे क्वेश्चन सामने आए अचानक से तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, वो उसको स्किप करना है या नहीं करना है. व्हाई वी आर सेइंग अबाउट एक्यूरेसी? सी पूरा महाराष्ट्र बोल रहा है हमें टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये
फिर भी कट ऑफ कितना लगा है 53.5, मींस accuracy is more, that's why cut off is higher. Understood? अगर बच्चे बोल रहे पेपर टफ गया है, पेपर लेंदी था, टाइम नहीं मिला है, फिर भी अगर कट ऑफ 53.5 लगता है तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स आर वर्किंग विद देयर एक्यूरेसीज. That's why I am saying you have to get your accuracy first, then speed your process, and then go with tricks. Why I am saying this repeatedly? Because of this one. These are the speed breakers in this section. If your accuracy is more, then your number of chances to crack the pre and mains are more. That's why I'm saying just focused with your accuracy. Focused on your accuracy first. Understand the concept, get your accuracy, and then go with your tricks. Then you can solve it. In test series, when you are going with your traces or practicing for the test series or practicing for your main examination, then you have to plan your strategy, how you are going to attempt. टेस्ट सीरीज में हमें कितने मार्क आए ये नहीं देखना है भाई. टेस्ट सीरीज क्यों है? हमने अगर जो पढ़ा है वो हमें इंप्लीमेंट करना आता है या नहीं आता है. टेस्ट सीरीज इज फॉर दैट रीजन, नॉट टू सी योर स्कोर, हाउ यू स्कोर यू आर गेटिंग. वहां 70 मार्क पड़ रहे हैं आपको, कुछ फायदा है? यहाँ पे 53 भी क्रॉस नहीं हो रहा है. टेस्ट सीरीज क्या करना है आपको? You have to check your concepts, you have to check your syllabus completion, you have to check your time management. The test series are meant for this reason, not for your scoring reason. You have to check your accuracy, you have to check your syllabus completion, you have to check your time management. In proper 60 minutes you can solve your 100 questions, or at least you can read your 100 questions. You have to check it from test series. स्कोर के पीछे मत भागो झट से. समझ में आता है? पहले एक्यूरेसी करो, एक एक कंसेप्ट समझ के लो. कंसेप्चुअल स्टडी. अगर आप पेपर पूरा देखोगे, अबे हमने सिर्फ क्वेश्चंस कौन से देख रहे हैं हम लोग? मैथ्स एंड रीजनिंग के. इफ यू go with all the paper or all the questions, then you can understand the MPSC is asking the conceptual questions even in इसमें क्या geography and history also. In economics they are asking very factual pattern. हाँ, you have to learn the numbers. नंबर आप देखो, हर एक क्वेश्चन में नंबर पूछा है, एटलीस्ट नंबर पूछा ही एक तो इकोनॉमिक्स. आप देखो कैसे, तो आपको ये समझ के लेना है कि पैटर्न क्या है, कैसे है. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट की, ये समझ लो पहले. एक बार पेपर देखो, पहले सिलेबस देखो, पेपर देखो, आपको समझ में आएगा कि आपको कितना स्टडी करना है, कैसे डीपली करना है. इन साइंस, yesterday madam told you, I think so, if you are looking for the science question, they are one liner questions, but they are factual or they are conceptual. If you know the concept, then you can solve the questions, otherwise not. So conceptual, and nowadays the most important thing to get success is the conceptual understanding. Understand the concept first, don't go with the data. पहले कंसेप्ट क्या है देखो, उसके बाद डेटा के पीछे भागो. पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, हमें एक्यूरेसी आती है. मैथ्स एंड रीजनिंग के बारे में क्या है, हमें पहले कंसेप्ट समझ में आया है, कितने टाइप्स है मैथ्स के. सपोज एक टाइप है, उसमें हमें मैथ्स के 10-12 टाइप्स है, हमने वो पूरे पढ़ लिए है क्या, वो पहले सर्च करो. आइदर वी आर गोइंग विथ ऑल द टाइप्स और नॉट. देन you did the practice for all those types or not? You are getting the accuracy in these types or not? And then if you are getting all the 3 ticks checklist, then you can go with your speed, then you can use your tricks. This is the key for nowadays. If you are getting success, you want success in these exams, then this is the key factor, conceptual understanding.
If you are having concepts, you are having your post in your pockets. दिस वन, ये देख लिया हमने, राइट. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या दे, ये भी डायरेक्शन सेंस पे. अभी इसमें क्या किया था, सी, ही टेक्स 2 राइट टर्न्स एंड रन्स 2 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग ईच टर्न. ये कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट का 100 क्वेश्चन, राइट. लास्ट क्वेश्चन था पेपर में, स्टूडेंट को क्या लगा, टाइम कम था. तो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में यहां क्या करना है, यहां पे कंफ्यूजन बहुत लोगों का हुआ फास्ट में रीडिंग करने के लिए. दे गेट कंफ्यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट and they get wrong answer. Some students can't understand what we have to do. He takes 2 right turns, means how much time they are getting, turns and going through the distance. They don't understand this point, that's why they are getting with the wrong answers. So firstly we are saying, yes, firstly we are saying go with your, what we learned, go with your firstly concept, right. Firstly go with the concepts for maths and reasoning. I am saying about maths and reasoning. Firstly go with your concept, then एक मिनट, firstly go with your concepts, then second, पहले concept, then practice, then follow the accuracy process, right. Then after accuracy, what, evaluate yourself, then एरर, इसमें आ गया, इवेल्युएट में आ गया. उसके बाद मॉक टेस्ट, टेस्ट प्रिपरेशन, ठीक, टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, टेस्ट, एंड लास्ट go with your favorite tricks. If you want success in the examination, especially maths and reasoning, first understand the concept, follow the process, solve the examples, then go with the accuracy, and then afterwards go with the tricks and get your post, dream post, not only post, dream post, right. Get your dream post after follow these steps. If you are following these steps, then I am sure you are getting your dream post in your pockets earlier, right. Understood? Yes. For online students, yes, those who are watching this online, just follow our YouTube channel. Yes, what was it, YouTube. In YouTube you have to search Unique Combined English Medium. Just like, subscribe and follow our channel. If you want more updates and more details on your study for the combined examination, follow our Telegram channel, Unique Academy Combining English. And if you are having any doubts regarding with this batch, then contact our number 8605233344. Okay, we'll see in the next lecture. Tab tak, thank you.